Hello everybody. Today we have come up with 10 multiple choice questions which are very useful for all the agricultural exams. So there are 10 multiple choice questions against which there are 4 options, and after each question the answer is given. So let's begin. The first question is, which is the native place for maize? That is, maize is originated from which place? And the options are Africa, option 2 Mexico, option 3 China, and option 4 India. And the answer is option 2, that is Mexico. So maize is originated from Mexico. And the second question is, buffalo milk is not yellowish because buffalo milk yellowish क्यों नहीं होता है? The options are, it contains more fat, option 2 it contains no lactose, option 3 it contains no keratin, and option 4 it contains more calcium. And the answer is option 3, that is, it contains no keratin. As there is absence of keratin in the buffalo milk, it is not yellowish. And the keratin is a substance which provides yellow color to a milk. In cow milk there is presence of keratin, that's why it looks yellowish, but buffalo milk में keratin नहीं होता है, that's why it doesn't look yellowish. The third question is, clonal selection is used in. Clonal selection को हम किस चीज में यूज करते हैं? And the options are non-flowering species, option 2 flowering species, option 3 indigenous collection, and option 4 indirect introduction. And the answer is option 1, that is non-flowering species. Non-flowering species में clonal selection को यूज करते हैं. So what is clonal selection? Clonal selection is a process in which we choose the desirable character or the desirable member को हम choose करते हैं for vegetative propagation and to retain that character. So it's a type of vegetative propagation and used in a non-flowering species. But ये sexually propagated plants में भी use किया जा सकता है to avoid the ill effects of recombination and segregation. Recombination and segregation को avoid करने के लिए हम इसको सेक्सुअली प्रोपगेटेड क्रॉप्स में भी यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ रोटावेटर इज. रोटावेटर का स्पीड क्या होता है? ऑप्शन 1 100 to 200 ppm, ऑप्शन 2 300 to 400 rpm, ऑप्शन 3 200 to 300 rpm, and option 4 400 to 500 rpm. And the answer is 200 to 300 rpm. Question 5, insects are included in the phylum. Insects कौन से phylum को belong करते हैं? And the options are Annelida, Nematoda, Chordata, and Arthropoda. And the answer is option 4, that is Arthropoda. Question 6, a fruit which develops from an inflorescence is known as. A fruit जो एक inflorescence से develop करता है उसको हम क्या बोलते हैं? And the options are simple fruit, aggregate fruit, composite fruit, none of the above. And the answer is option 3, that is composite fruit. So what is a simple fruit? A fruit which develops from a single ovary of a single flower. एक ही flower के एक ही ovary से जो fruit develop होता है उसको हम simple fruit बोलते हैं. And the second is aggregate fruit. It develops from the separate ovaries of a single flower. एक ही flower के separate ovaries से जो fruit develop होता है उसको हम aggregate fruit बोलते हैं. And composite fruit which develops from a cluster of flowers. एक इन्फ्लोरेसेंस में जितने सारे फ्लावर्स होते हैं उन सब से जो फ्रूट डेवलप होता है उसको हम कंपोजिट फ्रूट बोलते हैं. क्वेश्चन 7, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो. मैंगो का कौन सा पार्ट एडिबल होता है? ऑप्शन 1 न्यूसेलस, ऑप्शन 2 मेजोकार्प, ऑप्शन 3 एंडोस्पर्म, एंड ऑप्शन 4 एंडोकार्प. एंड द आंसर इज ऑप्शन 2 मेजोकार्प.
क्वेश्चन नंबर 8, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किस ऑर्गेनिज्म के स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं? ऑप्शन 1 algae, ऑप्शन 2 mycoplasma, ऑप्शन 3 virus and ऑप्शन 4 fungus. And the answer is fungus. The study of fungus is known as mycology. Question number 9, elevation refers to, option 1 accumulation of clay and sesquioxide oxide in lower horizon, option 2 accumulation of clay and sesquioxide oxide in the upper horizon, option 3 removal of clay and sesquioxide oxide from lower horizon, and option 4 none of the above. So the answer is option 1, that is accumulation of clay and sesquioxide oxide in the lower horizon. In our soil profile का upper horizon से जो clay and sesquioxide oxide wash out होके लोअर होराइजन में एक्यूमुलेट होता है, उस प्रोसेस को इल्यूवेशन बोलते हैं. सॉइल पीएच इज अ मेजर ऑफ, सो सॉइल पीएच किस चीज़ का मेजर है? ऑप्शन 1 एक्टिव एसिडिटी, ऑप्शन 2 रिजर्व एसिडिटी, एंड ऑप्शन 3 एक्सचेंजेबल एसिडिटी, ऑप्शन 4 नॉन ऑफ द अबव. एंड द आंसर इज ऑप्शन 1 एक्टिव एसिडिटी. सो एक्टिव एसिडिटी के मेजर को हम पीएच बोलते हैं. व्हाट इज एक्टिव एसिडिटी? एक्टिव एसिडिटी इज द हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द सॉइल सोल्यूशन एट अ गिवन टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम में सॉइल सोल्यूशन में जितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहता है उसको एक्टिव एसिडिटी बोलते हैं. होप दिस इज यूजफुल फॉर यू ऑल. थैंक यू.